Hey, listener, and welcome to the 8th episode of Life Through a Learner's Eye. I'm your friend Armughan, and most of you might probably know me by now. And today is the 8th episode. Wow, I mean, it feels like a lot, and I know I say this in every podcast. So in today's episode, today's episode title is I Command, You Obey. It's on command and obey, and it's on respect and obedience and all that. I want to cover those topics because they play a really important role in my life, and I'm sure in most of your lives as well. So getting right into it, I want to tell you what triggered me to make this episode. All of my podcast episodes, they are just inspired from little events from my life, everyday events. And whenever I couldn't feel that I have a topic, I just look around me and look for those small details, and I think that what can I conclude from it that I can share to bring that can help you. So हुआ ये था, और obviously most of the events जो इस तरह की बातों को ट्रिगर करते हैं वो कॉलेज में ही होते हैं, ऑफ कोर्स, इन कॉलेज और स्कूल और वेयरएवर. स्कूल में भी होते थे. एक्चुअली आई विल टेल यू अ लिटिल स्टोरी अबाउट माई सेल्फ. स्कूल में होता ये था कि देयर वाज सो मच थिंग्स पाइल्ड इन मी. लाइक एक था कि वो स्टैक होती जा रही थी चीज़ें, एक के ऊपर दूसरी के. और आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ मोमेंट कि मुझे एक मौका मिले, मैं किसी के सामने खड़े होकर ये सारी बातें उन्हें कहूँगा, जस्ट टू प्रूव दैट दे आर सो रॉन्ग एंड दे आर लुकिंग एट इट सो रॉन्ग. Obviously it was hate as well. It was hate, but it was like driven from wrong things. Hate is wrong however you do it. But मेरे अंदर था ये, और मैं चाहता था कि यार किसी तरह पता लगे. और वो जब मैं देखता था अपने इर्द गिर्द अपने फ्रेंड्स को देखता था कि हाउ दे पास थ्रू ऑल ऑफ दिस थिंग, और फिर मी एज एन इंडिविजुअल मेरे ऊपर जो कुछ होता था, क्या तो ऐसे रहूँ जैसे कितना तशद्दुद होता था. बट मेंटली इट इज़ लाइक दिस. आई वॉन्ट यू टू सी इट एज अ क्राइसिस. इट इज़ अ ह्यूमन क्राइसिस. ओके, सो वो चीज़ें मेरे अंदर इतना पाइल अप होती थी कि आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर वन मोमेंट टू जस्ट गेट इट आउट, एंड आई वाज लाइक, मैन, इफ आई गॉट वन मोमेंट आई विल डू इट, या समथिंग लाइक दैट. अब मेरे पास नाउ आई हैव फाउंड द वॉइस, आई हैव फाउंड एवरीथिंग, so I can talk. So I look for everyday patterns and everyday things that happen, and I talk on them, and I want to help you. I want to inspire you on some level that these things are happening and we need to change them. So हुआ ये था कॉलेज में कि it was maths period. हमारे मैथ्स के सर ने तो उन्होंने कहा कि मैथ्स की बुक, हम पिछले दिन कहा था ना कि मैथ्स की बुक लेकर आनी है. मैथ्स की बुक मैं कभी नहीं लेकर गया. आई मीन मोस्ट ऑफ द क्लास में कभी नहीं लेकर गया, क्योंकि सर ने कभी पूछा ही नहीं कि मैथ्स की बुक. वो उनका बस काम है आके क्वेश्चंस करवा देते हैं और हमने बना बस वो लिखने होते हैं. तो उस दिन उन्होंने पिछले दिन कहा था ऑब्वियसली, तो नेक्स्ट डे मैं नहीं लेकर गया. थोड़ी सी थी मेरी भी, चलो आई एडमिट के मुझे लेकर जानी चाहिए थी जब उन्होंने एक प्रिकॉशन दे दी है. I mean, of course, there is precaution that an attack is coming from him, that he'll turn into something really complicated the next day, and तो मुझे याद नहीं रही लेके जाना. of course, कॉलेज मेरा घर अलग है, कॉलेज अलग है. like literally I don't let these two intervene. I don't let, or there's the inner me, the real me, and then the college me. I don't even let these two intervene. दिस इज़ ऑन सम लेवल. तो मुझे याद नहीं रही घर आके, ऑब्वियसली बैग तो खोलना नहीं होता जब तक कोई बहुत ही वो मजबूरी ना हो. एंड ऑब्वियसली मजबूरी से याद आया आई हैव टू गो टू कॉलेज टुमारो, एंड आई डिडंट डू वन थिंग. वाओ, पॉडकास्ट हेल्प्स मी रिमेंबर, राइट. तो उन्होंने किया ये कि उन्होंने कहा चल मैथ्स की बुक. मैंने कहा सर नहीं है. और मेरा साथ एक आई हैव अ फ्रेंड, जो ही ऑल्सो सेट कि नहीं है. तो ये मैं कहा उठो बाहर जाओ. आई वाज लाइक सर, जो क्वेश्चंस करवाते हैं, जो टेस्ट होते हैं, सब इतने ठीक है. वो सब कहते नहीं उठे बाहर जाएं, और उठो बाहर जाओ. मतलब इज़्ज़त तो
अभी जैसे तो नहीं हो क्योंकि ऑब्वियसली बड़े हैं और आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिम नो मैटर व्हाट ही डज, ही इज़ ओल्डर देन मी। तो मैं कहा ठीक है, बाहर गए और हमारे कॉलेज का ये प्रोसीजर है, आप क्लास से बाहर आपको नीचे ऑफिस में बुला लिया जाएगा एंड इट्स अ होल फॉर्मेलिटी है। मतलब जिस तरह माई फादर यूज़ दिस वर्ड कि कहते हैं डंडे का जोर, वो वाली सारी वो है। एंड यू नो मैंने कहा ठीक है चलो क्लास से बाहर निकाल दिया, आई मीन जस्ट इट्स वन टाइम ओके। क्लास से बाहर गया, उन्होंने कहा ऑफिस में आपको बुला रहे हैं सबको, कुछ दे गए, आई डोंट नो 5-6 बॉयज़। वी वेंट इन द ऑफिस, सबसे पहले मेरा गया वो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ऑब्वियसली ही नोज माई फादर इज़ अ टीचर एज वेल एंड ही इज़ द ग्रेटेस्ट आई हैव सीन, आई मीन आई हैव सीन लाइफ, ही इज़ द ग्रेटेस्ट। तो उन्होंने कहा कि आपके तो मैं अब्बू को कॉल करता हूँ, प्रोफेसर साहब को कॉल करके बताते हैं कि आप बुक नहीं लाते एंड दिस एंड दैट। और सबको क्या है कि अब बुक ना लाने पे इतनी आई थॉट ऑफ इट एज अ फॉर्मेलिटी, दे फॉर्मेलिटी पूरी करना। आई न्यू दैट माई डैड वॉज गोइंग टू से नथिंग यू नो एंड आई वाज लाइक ठीक है आप कर ले कॉल। उन्होंने मेरे सामने नंबर निकाल के अपने रजिस्टर से उन्होंने कॉल की एंड उन्होंने कहा कि आपका बेटा बुक नहीं ला रहा, तो सर बहुत खफा हो रहे हैं, बुक लाना बहुत ज़रूरी है। आई वाज लाइक वाओ, they literally called my dad for this and I knew inside me 100% that my dad is not going to say a single thing to me, not a single thing, and that happened actually. That's true, I knew it. So I went back into the class and I said कि सर उन्होंने कॉल करके जो आप चाहते थे वो पूरी होगी, ये फॉर्मेलिटी, मतलब I didn't say like this of course, मगर in the back end हो यही रहा था। मैंने सर को जाके कहा कि सर कॉल कर लिया, अब आप इस क्लास में बैठने दें। प्रिंसिपल ने कहा, वाइस प्रिंसिपल ने कहा, कहते हैं अच्छा आ जाओ। एंड एज आई वाज वॉकिंग ही सेड कि आप घर वाले मैथ्स पढ़ने हैं, तो मैंने आई डिडंट रिप्लाई एंड ही सेड कि ज़ाहिर सी बात है घर बुक घर छोड़ कर आया तो घर वालों के लिए छोड़ के आए, पढ़ रहे होंगे। आई लाइक ओके व्हाटएवर मी, आई डिडंट रिप्लाई। तो यू नो उन्होंने क्लास में मुझे बैठने भी दिया, तो इतना दे मेड अ बुक अ लाइफ दैट सिचुएशन। मेरे तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स, आई एम ब्लेस्ड टू हैव दीज पेरेंट्स, दे अंडरस्टैंड। माई फादर ही अंडरस्टैंड्स द मोस्ट। सो मैं उनके लिए आई फेल्ट फॉर द अदर गाइज, फॉर द अदर बॉयज दे वर देयर कि देयर पेरेंट्स डिडंट अंडरस्टैंड एंड उनको घर जाके क्या करना होता होगा, क्या फेस करना पड़ता होगा। और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लाइक सो, आई एम सो सिक ऑफ देम। लाइक इतनी सी बात पे फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए इट्स जस्ट द सेम दैट आई कमांड यू ओबे एंड यू डोंट से अ थिंग, यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट एंड वी कैन यूज यू। एक्चुअली पेरेंट्स एंड टीचर्स दे मेक दिस मिस्टेक, even though your child he's your child, of course he's yours, but you cannot see him as a byproduct of you. He's another human being. Even though he has your blood, he's a completely different human being. Obviously you'll be same on some levels, but he is a different human being and you have to respect that. You have to respect the basic fact of him being a human being. And the most biggest mistake, and I have done this too, I have done this with my friends. The most biggest mistake you do is when you know that something is good for you, something that proves good for you, of course it's good, and you try to tell other people and you try to force them into change. You try to, even if you tell someone to change, they'll immediately reject it. And if you force them, they'll reject it at a greater level, because obsession creates rejection. Even if you're right, growth or personal development, that doesn't happen like this. So colleges में, schools में यही होता है, they see these students as byproducts of the college or the administration or something, and they can use them as they want, as they please. And then the holy idea comes in कि हम तो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं. Of course आप हमारी बेहतरी के लिए कर रहे होंगे, but you know, but
your colleges and your school, they don't perform well just because they are just based on command and obey system, and they are based on obsession, which in turn create rejection. If you understand human psychology a little more, and if you understood this thing, तो मेरा नहीं ख्याल कि तब मेरा ये ख्याल है कि तब जो है you'll have a greater success rate even in your schools, even in your colleges, if you understand these simple little things that the education system, they do it wrong. So there is this study, yes, I read this study, and it was on blind obedience. I don't know, it was the Mulliver's or something, Mulliver's experiment. Actually what he did was I will tell you the conclusion of the study. The conclusion of the study was this: they set up an experiment for people, and they surveyed some people, and it was on blind obedience. And उस experiment में था ये कि आपने questions करते जाने हैं, even though एक स्क्रीन के पीछे एक बंदा बैठा है, उसके साथ हर क्वेश्चन का जवाब गलत देने पे ना कुछ एक ऐसा काम हो रहा है which can ultimately lead him to die, an electric shock. तो वो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस हैं, 20 पे अगर वो आंसर, ऑब्वियसली जो दूसरी साइड पे बंदा बैठा है वो दैट वाज अ रिसर्चर, एंड इट वाजंट हैपनिंग, बट दे पुट अप दिस के वो दे वांटेड टू स्टडी ओबीडियंस. तो एक रिसर्चर और दूसरी साइड पे जो जिस पे रिसर्च करनी है, जो ह्यूमंस जिस पे रिसर्च करनी है, उसे आके कहता है कि आपने ये करते रहना है, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ स्क्रीम्स और पेन और येलिंग यू हियर, यू हैव टू जस्ट कीप डूइंग इट. और उन्हें लगा था कि इन्हें जब ये बंदा ही प्रिटेंडेड टू फेंट, उन्हें लगा था कि जब ये बंदा when the researcher will pretend to faint, जब वो ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे वो बेहोश हो गया, जवाब नहीं देगा, तो वो सवाल पूछना बंद कर देगा, या एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो कहेगा कि नहीं, मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना. बट they were wrong. They blindly followed the instructions. 86% of the people made it to the end, where the victim was the made up victim was apparently going to die. This is what's happening. We human beings, we act like sheeps. We follow so much, we don't even think. We obey so much. Obedience is a good thing. I'm not saying that obedience is bad, but there's a fine line between obedience and blind obedience. If you blindly follow, of course you will, in the end, even if you reach the destination, like, what's the point? Success is not in the destination, it's in the journey. It's the journey which you enjoy. And if you close your eyes all through the journey, what are you going to see? What are you going to enjoy? How are you supposed to grow yourself? How are you supposed to think? We human beings are creative creatures, and that is our purpose. We need to think. It's a need. We need to think for ourselves, to create for ourselves. And अब जब एजुकेशन सिस्टम में ऐसे होता है कि एक कमांड एंड ओबे इन्वायरमेंट होता है, तो बच्चे जो हैं वो इतने एक लैक ऑफ ऑटोनॉमी फील करते हैं. लैक ऑफ ऑटोनॉमी मीन्स के वो फील करते हैं कि बस दे आर जस्ट बीइंग कंट्रोल्ड एंड दे नीड टू डू नथिंग, दे जस्ट हैव टू फॉलो कमांड्स एंड फॉलो ऑर्डर्स. और जब मैं स्कूल में था तो देयर इज दिस एजुकेशन सिस्टम, एक्चुअली उसके नाम में भी एजुकेशन सिस्टम है, एक एकेडमी है, और वो काफ़ी सक्सेसफुल एकेडमी है. मार्क्स काफ़ी अच्छे ले आती है. टॉशी एजुकेशन सिस्टम, वो दे अप्रोच्ड अस इन स्कूल एंड दे सेड कि बच्चे आते हैं मैट्रिक के बाद भी और इंटर के बाद भी, वो दे आर नॉट क्लियर कि उन्होंने आगे किधर जाना है और ये वो. एंड आई अंडरस्टूड दैट आफ्टर अ टाइम कि वाई दे आर नॉट क्लियर. ऑब्वियसली दे वोंट बी, क्योंकि दे आर नॉट टॉट टू थिंक फॉर देमसेल्व्स. दे जस्ट टॉट दीज कि ये डॉट है, ये डॉट है, ये डॉट है. दे आर नॉट टॉट हाउ टू कनेक्ट दोज डॉट एंड फॉर्म अ पिक्चर दैट कैन रियली फॉर्म अ मैप that can help themselves. They are not. Obviously when they will go to the practical life, जब उनको
एक उनको ऑटोनमी, उनको एक्सपोजर दिया ही नहीं गया. तो ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दे गेट ऑल द एक्सपोजर दे फील पजल्ड. तो इसीलिए ज़रूरी है फॉर ह्यूमन लाइफ टू नरिश दैट you make them feel like in control. If you make them feel like that they are in control, that they are controlling themselves, they are controlling their lives. अभी तो स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि बस ये कॉलेज है and they rely, and most of the students they go down this poisonous path, this cancerous path. और वो ये करते हैं कि वो बस अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए कहते हैं बस जी कॉलेज जा रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्री इंजीनियरिंग हो जाएगी, फिर कुछ और कर लेंगे, वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फिर ये दे जस्ट रिलाई ऑन दिस. और वो बस उस कोर्स को उसको फॉलो करते हैं, अपनी ऑटोनॉमी छोड़ के, डोंट रियलाइजिंग दैट देयर इज सो मच दैट यू कैन डू राइट नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलेज. देयर आर सो मच अदर थिंग्स दैट यू कैन डू राइट नाउ विच कैन हेल्प यू ग्रेटली रीच देयर. डोंट रियलाइज दिस. वो बिल्कुल ही ऑटोनमस, बिल्कुल ही जो है सोचना ही छोड़ देते हैं कि बस ठीक है यार जा रहे हैं कॉलेज. वो दे थिंक के वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उन पे रख देते हैं. एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग. वी जस्ट प्रूव्ड इट. अभी तक जितने भी हमने बातें की हैं वो यही हैं. When you have a lack of autonomy, obviously when you're going into the practical life, you will feel this lack. You will be puzzled by it. And I want to end with one more research. A research on autonomy when people feel like they're in control. So this research is I'm reading a book, The Power of Habit. उसमें ये लिखी हुई थी. एक उसके दो वर्जन हैं. I'm going to tell you both of them. First of all, Starbucks, most of you might know Starbucks में उन्होंने they sell customer service. They don't sell coffee. They are a customer service organization, and if you really dig deep down, you'll know this. So Starbucks में वो अपने employees को जो है ना, each outlet पे, I don't know what do you call them, on each of it हर branch पे ना, वो उनको employees को एक वो sense देते हैं, control देते हैं कि they can customize the branch as they like, and they can have the freedom. और वो ख़ुद से अरेंज कर सकते हैं चीज़ों को, जो चीज़ें रखी हुई हैं उन्हें ख़ुद से अरेंज कर सकते हैं. जो चीज़ उन्हें नहीं पसंद आ रही, they can contact the manager is like a friend. It's all a friendly environment, and that is what has caused Starbucks' success so fast. A friendly environment where people feel like they are in control. Their willpower is encouraged. The other experiment जिस साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड Starbucks ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये किया, अपनी कंपनी में, वो ये था कि रिसर्चर्स ने दो ग्रुप ऑफ पीपल लिए, एंड वन ग्रुप वाज टोल्ड कि आपने करना ये था कि पहले उनके सामने कुकी एंड रेडिश, आई गेस देयर वर दीज बोथ थिंग्स, और उन्होंने कहा था दैट यू कैन ईट जो भी आपको अच्छा लगता है ना, आप इन दोनों में से खा सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है. तो एक डिफरेंस ये था इन दोनों ग्रुप्स में कि एक को जो था ना, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी दिया कि दे बिकेम वेरी फ्रेंडली to them, and they made them feel like that they are in control. और एक ग्रुप को कहा कि they made them feel like they're just following orders. तो obviously हर बंदे ने अपनी मर्जी से खाया जो भी खाया. एंड में उन्होंने करना ये था कि they had to, एक कंप्यूटर था, कंप्यूटर स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहे थे, and as the number flashed, जब भी दोनों सेम नंबर फ्लैश करते थे ना, they have to hit a space bar. तो ये 20 मिनट्स या 15 मिनट्स के लिए ये प्रोसेस था. तो जब फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए वो दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के साथ जब उन्होंने जो ईटिंग वाला, जो खाने वाला था, वो कुकी एंड द रेडिश, व्हेन दैट एंडेड और दैट केम, तो दैट कंप्यूटर जो नंबर फ्लैश कर रहे थे वो वाला पार्ट आया. तो रिसर्चर्स फाउंड दैट वो जिन्होंने इनको एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी दिया था, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनको इन्होंने कहा था कि आप
जिनके साथ अच्छा बिहेव किया था, जिनको बिल्कुल ही जो है ना ऑर्डर्स नहीं दिए थे, जिनको ह्यूमन फील करवाया था, they lasted to the very end. Their willpower was high. And जिनको उन्होंने कहा था that they made them feel like follow orders in the mid of the experiment, like first 5, 6, 7 minutes, they felt like that this was a waste of time and they shouldn't be doing this silly experiment. And they said that they wanted to leave and all this, you know. So obedience, if you schools and colleges really need to look at this research. This is mind-boggling for them कि वो ऑर्डर्स नहीं देने, ऑर्डर्स ना देने पे तो उनका तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाए. जब आप ऑर्डर नहीं देते ना, और जब आप एक ह्यूमन को, इवन इफ इट्स अ चाइल्ड, you know what's best, still the child has to learn for himself. जब आप एक चाइल्ड को एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी देते हैं, जब आप बताते हैं कि you have a freedom, you can create for yourself, then he actually learns. तब लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है. डंडे के ज़ोर में नहीं होता, जिस तरह मैं फादर से, डंडे के ज़ोर पे नहीं होता. And I really enjoyed today's podcast. This was it. That was the ending line. डंडे के ज़ोर पे नहीं होता. That is the ending line. I want you to remember that. And be sure, to the listener, be sure to throw your ideas down in the comments, throw your queries down in the comments. I love to reply to you, and I love you all, and I'll see you in the next episode. Take care.